So this lecture is about the translational vectors. We know that in the primitive translational vector in case of R1D is like N1 A1, where A1 of course is the lattice parameter and A2 A3 are all these lattice parameters, while these N1 N2 and N3 are actually some integers. In case of our one dimension, this translational vector is N1 A1, and in case of 2D, then we have N1 A1 and A2 N2, right? Similarly, for the three-dimensional case, this translational vector is given by N1 A1 plus N2 A2 plus N3 A3, right? Let's calculate these translational vectors in a three-dimensional space. So say we have a cube. In case of cube, we all know that the dimension along the lattice parameter along x, y, and z all are same, and here they are denoted by a distance a, right? We have denoted them by a distance a. Then let's see what happens if we transfer lattice point from our origin. Selected origin is this point, and we move to the next one just along x-axis, right? So x-axis के along अगर आप move करते हैं, then we have traveled a distance just n1 along a1. So a1 is given by ai unit vector. Similarly, अगर हम y-axis के along travel करते हैं from the origin to the next nearest neighbor, then we have a2 given by a j unit vector, right? And similarly, the transition along our z-axis would be a3 given by a k unit vector. This was about the simple cube. Let's see what happens to these primitive translational vectors in case of our body-centered. Body-centered cube is here. यहाँ तीन cubes show किए गए हैं. One is here. The missing cubes are like इसका और इसका front side का missing है. We know that कि अगर हम एक nearest neighbor को देखते हैं तो we have about 8 nearest neighbor in case of body-centered, right? और वो nearest neighbor कुछ इस तरह से arranged है कि अगर हम origin select कर लें इस point को, one edge is selected as an origin of our frame of reference given by x-axis over here and y-axis is here. The z-axis is just an upward direction. तो यहाँ से हम अगर अपने lattice vectors calculate करना चाहें, क्योंकि ये first nearest neighbor को connect करेगा, so ultimately your origin और इस cube का जो central atom है, they are connected to each other. By the way, these lattice translational vector are those कि जिनसे आप अगर एक unit cell बनाएंगे तो वो smallest volume का unit cell होगा, and similarly it must have one lattice point enclosed by that cell, right? So we know कि इस तरफ एक्सिस पॉजिटिव है x एक्सिस और इसी तरह इस तरफ y एक्सिस भी पॉजिटिव है, while if we travel in the opposite direction towards z axis then it would be the negative one. a1 के अगर हम coordinates find करना चाहें, let me first specify a1 ये है, a2 इस तरफ है and a3 इस तरफ है. हम calculate करना चाह रहे हैं इस वक्त a1 के components. So first we have to travel a by 2 distance along our x-axis, a by 2 distance along our y-axis, and minus a by 2 distance along our z-axis, right? Just look at that
कि हम यहाँ से हाफ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करते हैं, हाफ डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन टू और जी एक्सिस ट्रेवल करते हैं, और उसके फिर बाद हाफ डिस्टेंस अलॉन्ग आर पॉजिटिव वाई एक्सिस ट्रेवल करते हैं. Then these components are like a by 2 along I unit vector, a by 2 along j unit vector, a by 2 along k unit vector, which certainly is a negative, and a by 2 along our y-axis, which is positive. So a1 is given by a by 2 I unit vector plus j unit vector and minus k unit vector, right? Similarly, if you look at this centered atom, जो इस क्यूब का बॉडी सेंटर क्यूब का पार्ट है, तो उस केस में हमें क्या करना है, लेट्स अगेन सी कि इसके कंपोनेंट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाएं. फर्स्ट वी हैव टू ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस हाफ डिस्टेंस विच इज़ नेगेटिव, a by 2 एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं जो कि माइनस है. इसी तरह से a by 2 हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे और a by 2 z एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे. ओके, राइट. सो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, देन अल्टीमेटली द कंपोनेंट्स ऑफ दिस a2 और a by 2 minus I unit vector plus j unit vector plus k unit vector. Alright, and similarly for your a3 we have to just to travel a by 2 along our positive x-axis and a by 2 along our negative y-axis and a by 2 along our positive z-axis. So the components of a3 are a by 2 I unit vector minus j plus k unit vector. Alright. So these are the translational vectors, and अगर हम फेस सेंटर्ड के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो फेस सेंटर के केस में यू हैव दिस क्यूब, जो इसके एज एटम्स हैं दीज आर जस्ट ब्राउनिश, और फिर जो इस अपर फेस के सेंटर में है वो रेड है, एंड सिमिलरली इसके अपोजिट फेस जो लोअर फेस है उस पर भी यहाँ रेड शो करवाया गया है. एंड ऑफ कोर्स जो ये सामने का फेस है इसका ये पार्ट है मैजेंटा कलर, और इसके बैक साइड का ये मैजेंटा कलर है, और जो सामने फ्रंट आपको ये फेस नज़र आ रहा है ये फेस ब्लू, और इसके साथ इसी तरह से ब्लू फेस के सेंटर में एक एटम कनेक्टेड है, एक लेटेस्ट पॉइंट या एटम आप कह लें वो मौजूद है. सी frame of reference is like x-axis is here, y-axis is here, and z-axis along our upward direction. अब हम देखते हैं कि इसका जो लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं. इसके नियरेस्ट नेबर्स अगर आप देखें तो वन इज़ हियर, द सेकंड वन इज़ दिस वन, एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन. सो हम इन तीन जो नेबर एटम्स हैं हमारे रेफरेंस के, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं. अगर हम a1 की बात करें तो a1 यहाँ लाई करता है. दिस a1 हैज़ components like first we have to travel a positive half a distance, then we have to travel a positive half distance along first along x-axis and then along our y-axis. So the components of your a1 are a by 2 I unit vector plus j unit vector, right? And if we talk about this a2 here, a2 is like first we have to travel a positive a by 2 along x-axis and a positive a by 2 along our z-axis. Then the components are like a by 2 I unit vector plus k unit vector. And similarly if you talk about the a3, then it has for sure the components a by 2 along our y-axis and a by 2 along our z-axis. So finally the components are a3, the components of a3 are a by 2 j unit vector plus k unit vector. Okay, this was about the translational vectors. Thank you for your attention.